ओके सो 6 बज गए हैं एंड एज माय प्रॉमिस आई एम हियर 10 वीक्स ऑफ युक्ताहार प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने के लिए. सो आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ ऑल दी प्रिपरेशंस जिसका मैंने कल बात किया था वीडियो में. So for today we are starting with our very first guideline. It's going to be a very simple guideline. And ये जो guideline है ये किन लोगों के लिए है, because we received a lot of forms जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग health concerns थे. So let me tell you that this guideline that we are doing today, it is going to be applicable for everybody. सब लोगों के लिए ये applicable है. अगर आपको diabetes है, thyroid है, PCOD है, bloating, constipation, hormonal imbalances, hair fall, any of these issues, acne, for everything this is applicable. So everybody should follow this guideline. Another thing is कि बहुत लोगों ने पूछा था कि I want to gain weight, so can I do this project? So this guideline for today, ये weight gain जिनको करना है उनके लिए भी applicable है. हम ये आज से शुरू करेंगे. So it's 6 o'clock right now. आपका डिनर बाकी है. So from today onwards you start this guideline. Very simple thing to do. And आप इसको अगले 10 weeks तक continue करेंगे. So this is not only for one day. This is going to continue for the next 10 weeks. This guideline is going to be applicable for the next 10 weeks. So what is the guideline? The guideline is actually the 3 R's of TB-TBD. The 3 R's of TB-TBD, जिन्होंने भी बुक पढ़ा है, they will know what the 3 R's of TB-TBD is. It is right quality, right quantity, and right timing. So, what is right quality in Yuktahar TB-TBD? Is it about trying to know what is the calories of the food? No, it is not. The right quality of the food is simply that food which doesn't contain ultra processed ingredients. So Nova ultra processed ingredients should be a complete no for the next 10 weeks. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने किचन का इन्वेंट्री लीजिए और ऐसे जितने फूड आइटम्स हैं जिनमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप अपने किचन से एलिमिनेट करेंगे आज से. आप कैसे पहचानेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या है? मोस्टली सारे पैकेज्ड फूड इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. तो ये पैकेज्ड फूड जो है इनको आप लेबल्स चेक करिए. सामने के लेबल्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग क्योंकि सामने में हमेशा ग्लूटेन फ्री, this free and lactose free, and they try to make it very fancy and हमें ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत हेल्दी है. So always refer to the back label क्योंकि back label में ingredients होते हैं and that is the place where you will find कि क्या चीज मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है या क्या चीज अच्छा नहीं है. So you go to the back label. अगर उनमें ingredients list में अगर ऐसा कुछ लिखा है जिसको आप किचन में यूज नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल से हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या फिर नेचुरल फ्लेवर्स, तो दे विल से नेचुरल फ्लेवर्स बट ये नेचुरल होके भी दिस इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड. सो अगर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं उस लेबल पे, because we don't use any natural flavors in the kitchen. So basically अगर आपके डे टू डे किचन में यूज आने वाली चीजें अगर उस लेबल में लिखी हैं कि वो आप डे टू डे किचन में यूज नहीं करते हैं, then that means it's a ultra processed food. इसमें क्या क्या आएगा? केचप, सॉसेस, योर इंस्टेंट ओट्स, योर इंस्टेंट कॉर्नफ्लेक्स, जैम्स, जेलीज, mass produced breads, biscuits, cookies, chips, candies, all of these will come in this category. So for the next 10 weeks मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजों को आप अपने फ्रिज से, अपने किचन से निकाल दें, because we are not going to eat them at all. ये हमें क्यों नहीं खाना चाहिए इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बुक में दिया गया है. So please refer to the book. So right now, as soon as we finish this live, I want you to do this. The second thing is the right quantity. Now what is the right quantity? Again explained in the book, but I'll tell you with a very interesting story in fact. So if you know Swami Chinmayananda is basically from the Chinmaya mission, a very renowned and a great spiritual leader. So when he was in the ashram and he was talking with his disciples, he was talking and having a chat with his followers. He told them a story जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. So he mentioned that when he was very young, he was a young sadhak and he was just progressing on the spiritual path. तो आश्रम में जब लंच का टाइम आया तो वो लंच करने बैठे
और जब वो लंच करने बैठे तो टू हिज सरप्राइज उन्होंने देखा कि उनके बगल में जे कृष्णमूर्ति हैं। कौन है जे कृष्णमूर्ति? अनदर वेरी ग्रेट इंडियन स्पीकर, फिलोसोफर। सो जैसे ही उन्होंने देखा अरे मेरे बाजू में ये बैठे हैं, ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्हें लगा ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब वो अपने सारे क्वेश्चंस उनको पूछ सकेंगे, बिकॉज यू नो ही वॉज ईटिंग फूड, और खाना छोड़ के तो वो उठेंगे नहीं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम कि वो जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो उनको पूछ सकते हैं उस वक्त। सो ही सेड, ओ वाओ, दिस इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड मैं अभी सारे क्वेश्चंस इनको पूछता हूँ जो मुझे यू नो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जो मुझे हमेशा से दिमाग में था। सो ही क्लियर्स हिज थ्रोट एंड ही स्टार्ट्स, यू नो कि मैं कुछ, सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ही स्टार्टेड talking about his question, and then Krishnamurti realized what he is going to do, and he said that, young boy, when I eat, I just eat. So this was one of the very big lessons that Swamiji said that he learned through Krishnamurti, and he said that, you know, this is one lesson that we all should apply in our lives. So this is exactly what right quantity is about. If you know, look at any of our ancient scriptures, if you look at any of our you know, philosophical books, we often think that it is about a lot of things जो हमारे very esoteric things which शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे, but you will be surprised to know that almost all the ancient scriptures talk about how we should eat food. They always insist जबकि हम खाना खाते हैं तो हमें सिर्फ खाना खाना चाहिए, and this is exactly what the SPAR technique is, which is, you know, I've explained in the book, so you can have a look. But basically इसका मतलब सिर्फ ये है कि although in our modern world we feel कि अगर हम multitask करते हैं तो हम बड़े ही efficient लोग हैं, you know, we are some really successful people who are multitasking and we are just so busy and we feel that, you know, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा positive हमारा, you know, quality है that we can multitask, and we really talk about it proudly. But honestly speaking, जब भी हम multitask करते हैं, we are not multitasking, we are actually task switching. क्योंकि हमारे ब्रेन में at any instant of time, at any given instant of time, एक ही thought आ सकता है. So there is no way anybody can multitask. What they do is that they are constantly switching the task, कि एक काम फिर दूसरा काम फिर ये काम. So this is quite a stressful thing for the brain, because of which we are seeing a lot of anxiety and stress in the society today. Having said that, what I really want you to understand is that as far as food is concerned, I want you to monotask, no multitasking. When you are eating food, सिर्फ आप खाना खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे. आप ड्राइव करके खाना नहीं खाएंगे, आप ड्राइविंग करते वक्त खाना नहीं खाएंगे, आप आराम से एक जगह बैठकर विद पीस एंड विद लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द फूड, आई वांट यू टू ईट योर फूड. हम लोग ये क्वांटिटी जो है इसको हम लोग कैलोरीज से, नंबर ऑफ ग्राम्स, कितने मैक्रोस हैं, कितने कार्ब्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में. सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट फूड. Food is the most basic thing, the most essential thing that keeps us alive. और जब बहुत ही बेसिक और एसेंशियल चीज जो होती है उसको हम जितना सिंपल रखें उतनी ही सादगी से फिर वो जीवन चलता है. सो लेट अस जस्ट मेक इट वेरी वेरी सिंपल. लेट अस जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस. सो दैट इज अबाउट द राइट क्वांटिटी. नाउ व्हाट अबाउट द राइट टाइमिंग? द थर्ड आर. द थर्ड आर इज द राइट टाइमिंग. राइट टाइमिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमें हमेशा बताया गया है कि हम जो खा रहे हैं या फिर हम जो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, दीज आर द ओनली टू थिंग्स जो मायने रखता है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आप दुनिया का बेस्ट हेल्दी खाना गलत टाइम पे खाएंगे, योर बॉडी इज गोइंग टू क्रिएट टॉक्सिन्स and it is not going to work for you. So the timing of the food is very very important. And what is the timings जो हमें follow करना है? From today, starting from today, it is breakfast which I want you to do latest by 9 a.m. Oh boy, which means that you आपको जल्दी भी उठना पड़ेगा. Which means that, you know, you cannot wake up at 10 a.m. You cannot wake up at 10:30 a.m. You have to wake up at least like a decent time, 7 a.m. So have your breakfast latest by 9 a.m. Lunch between 11 to 1, evening 3 to 4 p.m. and then dinner latest by 7 p.m. So this is the timing that I want you to follow. Now if अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो लंच के लिए भूख ही नहीं लगती and what will I do? So the answer is this, that if you are having dosas and paranthas and chola bhaturas for breakfast, तो definitely आपको 11 से 1 के बीच में भूख नहीं लगेगी for lunch. So आपका breakfast जो है it should be light.
light enough so that you feel really hungry for a hearty wholesome lunch. लंच इज द बिगेस्ट मील ऑफ द डे, इट शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ द डे. इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज नहीं हो, ताकि कि हम जो है अपने लंच के सही डिसेंट टाइमिंग विच इज नून 11, 12, 11:30, 12:30 उस समय तक हमें अच्छी खासी भूख लगनी चाहिए. So this is it, and this is what I want you to follow for the next 10 weeks. And very simple thing, the 3 hours of TBBD, and I also want you to ensure that you are practicing this for the next 10 weeks. So now, do we have any questions? Yeah, there is one question that I will not be able to eat by 7 p.m. So ma'am, what should we do? Okay, so if you will not be able to eat by 7 p.m, firstly, सबको ऐसा लगता है कि हम 7 बजे तक नहीं खा सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू ईट बाय 7 p.m. इफ यू रियली हैव a very genuine reason, that can be a day, just a one day thing कि आज कुछ ऐसा हो गया और मैं नहीं खा पाया. But on a daily basis we need to put the right effort so that we are able to eat it at 7 p.m. अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, then it's a very different matter. In fact, for the night shift, again in chapter 8 there's a very beautiful flow chart which you can follow for people who are working night shifts. But sticking to the question, अगर आप 7 p.m. पे किसी भी हाल पे डिनर नहीं कर पाते हैं, even after putting the right genuine efforts, then what you can do is that you can have your evening meal a little later, so like around 5ish, 6ish can be your evening meal, and it can be a little more heavier, like it could be something like a pohas, which is little more heavier and not like just a simple fruit, so that you feel satiated enough to pass through the evening, and then you can try to eat your dinner as early as possible. Ideally it is very important कि आप सोने के 2 घंटे पहले अपना डिनर कर ले. If not 7 p.m, then at least try to see that आप सोने के 2 घंटा पहले अपना डिनर कर रहे हैं. Any other question? Yeah, ma'am, there's one more question, that a packet of Saffola oats in the morning breakfast, is it good or not? A packet of Saffola oats, I would not know about any brand, but I would just say that if it's an instant oat, like an instant oat is the oat which gets cooked in 2 minutes. तो अगर ये instant oat है, then of course it's an ultra processed food जो यहाँ पे बताया गया था, so you have to not eat it. If it's the other kind of oat which is the steel cut and stuff, जिसको पकाने में 20-30 मिनट लगता है, very much similar to the दलिया that we have हमारे Indian food में, then it is okay to eat it. But having said that, again we always should try to eat food which is very close to our genetic makeup. So oats is not something that is an Indian origin. Oats is basically coming from the West, so it is better to minimize it as much as possible. Next question, somebody is asking, when are we starting phase 1? Okay, great. So when are we starting phase 1? We are starting phase 1 from Tuesday. We are not in a hurry because we want to take one baby step at a time. I don't want to give the 3 hours and phase 1 and everything all together. That is the reason why we are going to do this live continuously for the next 10 weeks. So we are going to start phase 1 from Tuesday onwards. And uske pehle, as I mentioned in the video yesterday also, please ensure that you have all your 4 herbal supplements जिसके बारे में बुक में बताया गया है, which is Trikatu, Triphala, Chitraka and Daru Haridra. So ensure that you have these ready with you. Tuesday when we start phase 1 आपके पास होना चाहिए. Ensure that you have the rice and the millets and the other pseudo cereals, a variety of them, at least 2 to 3 varieties if not more, ready with you. So इनको आप इकट्ठा कर लें, and we're going to start phase 1 from Tuesday. A lot of people have been asking me कि supplements कहाँ से लेने हैं. I have been talking about it a lot of times, so I'll repeat this कि आपके local Ayurveda stores से आप ले सकते हैं. India has a rich culture of Ayurveda, so thankfully mostly in all the cities we have these good reputed Ayurveda stores, at least for each locality, और या तो हमारे घर के 3-4 किलोमीटर की दूरी पे. अगर आपके घर के 3-4 किलोमीटर या आसपास लोकल आयुर्वेदा स्टोर है जिसका एक बहुत अच्छा गुडविल है, रेपुटेशन है, mostly Ayurveda stores are run by people through generations.
तो अगर उस तरह का है then you can rely on them, you can trust them and you can simply buy off these supplements from them. अगर ऐसा availability नहीं है then please go to my website. The name is my name munmunganeriwal.com. वेबसाइट के मेन्यू पे बुक सेक्शन है. बुक सेक्शन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे which I recommend and you can simply click them and buy off. We have two sections. One is for the Indian users, the other is for international users, which is Amazon.com. So you can just go there and buy them. And yeah, so that is how we can just start phase 1 from Tuesday. So thank you very much for joining me. And I'm going to leave right now. If you have any questions, then we can take it tomorrow. And I'm going to join you tomorrow, same time, same place, with the second guideline. Thank you.